Hello everyone, I welcome you all again on the YouTube channel of TEQIP GATE classes. This is all about me, and we started the subject which is machining and the metal machine tool operations. So both students like ME, mechanical as well as PI student can also join this subject. Okay. In the last lecture, lecture number 12, basically we discussed two concepts. So first was based on the peak to valley height, or in other words we can say that is a surface roughness. Okay, second concept, that was the economics in the metal cutting. Okay, and that economics in the metal cutting is very important from the engineering services examination perspective. Okay, so those who are preparing for ESC, they should go for it, because if it will be asked, then definitely it will give you 10 to 15 marks or maybe 20 marks. Okay, whether it's numerical or concept. Fine. So in the lecture number 13, today we are going to start another chapter of this subject, which is chapter number 2. Okay, that is based on the conventional machines. Okay, so 5 to 6 conventional machine are there that we are going to study. Okay, that what we are going to study in 5 to 6 lectures that we have already discussed in the first lecture. Okay, so I'm not going for that. Okay, so we are starting today in today's lecture. We are starting with the lathe machine tool. Fine, we'll discuss a little amount of the theory. I'm not going in the detail each and every one, but whatever the things which is very important and that has been asked, means on that basically the questions or objective problems has been asked previously in any of the examination, not only in GATE but ESC, public sector, or any JE and AEN examinations. Okay, so that will, I think, whatever today we are going to cover 90% of that questions that will be sold out from this topic. Okay, so if like एक घंटे में पढ़ने से आपका 90% तक हो जाता है, तो like by the way, if you are going to study full lathe machine, then there is a one book is there, Hazaran Chaudhary, so you can follow that, and that is in very detail, and if I'm making the video on that, so it will take me take me 6 to 7 hours, and that is not good. Okay, so in through this video I'm sure that maximum objective questions will be clear, as well as numerical as well. Okay, so theory part, as well as what are the operations that can be performed on the lathe, and what are the tools that is required for that, and the calculation, little amount of the one of the problem that we will discuss, that is based on the time calculation. Okay, so once again I welcome you all on the Let's Crack the Gate along with the TEQIP Faculties, and these are our social media platforms, so you can follow us, and if you have any queries you can write on this mail ID. Okay, so let's start. So for the easy understanding, मैं ज़्यादा detail में नहीं जाऊँगा. For the easy understanding for you guys, I'm just taking this figure. Okay, so देखिए इसमें मैंने पूरी लेथ भी नहीं ली है, वो इस वजह से कि शायद मैं constrained रहूँ. ठीक है, देखिए like this is a bed, this portion is bed. Okay, and over that the compound slide is mounted, cross slide is mounted, cross slide is mounted. So this is a cross slide. Okay, so this is nothing but, why we are calling it as a cross slide, because this is a bed is like this. Okay, these are the direction of the bed, and perpendicular to that this is a cross slide. Means cross we are telling because if these are the beds, then this slide can be moved over it. So this is nothing but it is crossing this one. So that's why we are calling it as a cross slide. Okay, so this is the cross slide. Okay, that can move in this direction, reciprocating motion in this direction. Okay, over that basically a disc is there. Okay, over this disc basically means in this side portion there is a disc is there, and disc is nothing but there is a specific thickness of thick disc is there, and that basically this angle is mounted over there, that 5 degree, 10 degree, 360 degree, like that. Okay, and initially like here some operation is going on, that's why it is inclined. This is in this direction, by the way it is horizontal, and this is along with this bad direction. Okay, so agar मान लीजिए कि ये horizontal होता तो it will be like this. Okay, now this basically this compound slide over this basically disc, there is a compound slide, and this compound slide is
fixed over this, not fixed completely, but it can be movable. Basically हमें जब भी रोटेट करना होता है तो हम उसको स्क्रू को ढीला करके हम लोग उसको रोटेट कर सकते हैं. मीन्स इट व्हाट एंगल यू हैव टू सेट, वी कैन मैनेज अकॉर्डिंगली. ओके, तो ये तो हो गया आपका डिस्क, ये हो गया आपका कंपाउंड स्लाइड विच इज ओवर दैट डिस्क और क्लोज स्लाइड वी कैन से. Over that basically there is a tool post is there. So this is nothing but a tool holder, this one, this device. And if you will see this one, then this is a tool. This is the back side of this tool, single point cutting tool, and this is the front side. Okay, now once it is fixed over here, now this portion is nothing but a taper turning. Okay, for the taper turning the feeding mechanism is also available with this compound slide. Means taper turning में क्या होता है, हमें जो मेन स्लाइड होती है क्रॉस स्लाइड, उसको जब हम लोग क्या करते हैं कि थ्रू फीड वी आर moving in this direction over the pad. Okay, not in the cross section, not in the perpendicular direction, but along with that. So हम move करते हैं, then because of that this will move in this direction in which we have to operate the turning. Okay, so this is the assembly part, and देखिए this side, this is the 3 jar chuck, this 1 jar, 2nd jar and the 3rd jar. So this we first of all this jar is basically mounted over a spindle. Okay, and is this whatever the workpiece is there, means we have to remove the material, we mount over this lathe. Okay, and then it will rotate, so we'll bring this single point cutting tool in contact with this, and that will remove the material by giving a depth of cut in the feed. But as it is rotating, so we also call this as a live stock, oh sorry, live center. Okay, this is live stock. Now another portion, this portion is this is not the part of this lathe machine, this is a drill bit. So this portion is nothing but this is the tail stock or tail stock, or we also whatever the center is there, basically we call this as a dead center. डेड सेंटर का मतलब है कि जैसे उसमें मैंने बताया कि आपको दैट इज रोटेटिंग ओवर दैट वट एवर द वर्क पीस दैट वी आर माउंटिंग, दैट इज रोटेटिंग एंड ऑल द ऑपरेशंस दैट इज कंडक्टेड ओवर देयर ओनली. ओके, ऑन दिस पार्ट. सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ लाइव सेंटर. बट हियर नो ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, जस्ट maximum time this device is also there. So this device is nothing but we are keeping from through this stand, basically we are keeping on the bed, and first of all what we are doing is we are, once it is fixed and we are like we have this assembly like ये आपका vertical portion हो गया, and this is like this one. So once this center is set with the dead center, ठीक है, डेड सेंटर इज सेट, तो उसके हम इसको क्या करते हैं, पैरेलल मूव करते हैं, एंड पैरेलल मूव करके हम लोग इस डायरेक्शन में लेके आते हैं. ओके, ना यहाँ से हमने सेंटर से फिक्स कर लिया कि कहाँ पे सेंटर है. नाउ आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, विल मूव दिस वन, दिस स्टैंड ओवर द बेड एंड विल ब्रिंग इट ओवर हियर. मान लीजिए कि ये आपकी शाफ्ट है, तो इसके सेंटर के साथ इसको आपको मैच करना है. If this center is not matching, it means that some offset amount is there. Offset है तो क्या होगा, आपको सेंट्रिसिटी मिल जाएगी अगर आप टर्निंग कर देंगे तो शाफ्ट में. ठीक है, so we have, that's why we have this dead stock is very important. Now अगर मान लीजिए कि आपको ड्रिलिंग करना है, जैसे ड्रिलिंग एक ऑपरेशन है, we can perform on the lathe machine as well. तो हम क्या करते हैं, जो ड्रिल बिट है, that drill bit we are mounting over this tail stock. And by the way, ड्रिलिंग में क्या था कि आप देखिए ड्रिलिंग ऑपरेशन जो drilling will start in the next one, but drilling operation में क्या होता है कि this is the tool, okay, and this is the drill bit and this is rotating. When it is rotating, we are giving a feed to the this tool in this direction. Okay, so that will remove the material. Now यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका टेल स्टॉक है, डेड सेंटर की तरह काम करेगा, तो ये रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि रोटेशन करने के लिए आपको वर्क पीस या फिर टूल में से एक की जरूरत होती है ड्रिलिंग में. तो यहाँ पे क्या है कि आपका वर्क पीस रोटेट कर ही रहा है ऑलरेडी, तो आपको ड्रिल बिट को रोटेट कराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बाय द वे ये ड्रिलिंग का ऑपरेशन नहीं है. ओके, ये लेथ का ऑपरेशन है. तो इतना ही बस मेरी तरफ से था. एक चीज और मैं बता देता हूँ कि हाफ नट एक डिवाइस होता है, एक सेक्शन होता है यहाँ पे, एक हाफ नट जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिकली. ठीक है, तो ये हाफ नट क्या होती है, लाइक हाफ नट को अगर आप लॉक कर देंगे, बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे आपको ये राउंड्स दिख रहे हैं, ठीक है, इस राउंड्स को इसको बोलते हैं हम लीड स्क्रू. ठीक है, लीड स्क्रू. नाउ ये जो लीड स्क्रू होता है, जब भी आपका
स्पिंडल रोटेट होता है बिकॉज स्पिंडल के पीछे जो कॉलम होता है, ठीक है। नाउ इन दैट कॉलम देयर इज अ गियर असेंबली इज माउंटेड इन दैट गियर असेंबली इज नथिंग बट अ गियर ट्रेन काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, गियर ट्रेन लाइक देयर इज अ ड्राइवर एंड इन इंटरमीडिएट गियर्स आर देयर एंड देन वी हैव अ ड्रिवन। तो इस तरह से बेसिकली ये असेंबली होती है पूरी आपकी जो कॉलम सेक्शन होता है बिसाइड दिस बिहाइंड दिस spindle. The lead screw and whatever the velocity that we are supplying through the driver, okay, that velocity is constant, but rotational speed as well as the diameters are different. That's why these things are different. But whatever the velocity that we are maintaining, that is constant. So that is through that only this lead screw will move, and through this only this spindle will move. Why I am telling this like this, I will tell you later on. तो यहाँ पे क्या होता है, एक हाफ नट होती है एंड दिस हाफ नट इज जनरली ओपन because after that like you can operate means you can manually operate this one, but अगर आपको इसको मैनुअल ना देके ऑटोमेटिक अगर देना है, दो कंडीशंस के लिए हम लोग हाफ नट को यूज करते हैं। फर्स्ट टू गिव अ फीड ऑटोमेटिक कंडीशन, ऑटोमेटिक अगर आपको करना है तब भी आप इसको फीड दे लॉक कर सकते हैं, हाफ नट को आपको लॉक करना है, लॉक, ठीक है। देन पहला ऑटोमेटिक है, देन लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर द ऑपरेशन दैट इज थ्रेडिंग, ठीक है, अगर हमें थ्रेडिंग करना है तब भी हम लोग हाफ नट को क्या करते हैं, लॉक करते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम वी वांट दैट जो आपका टेपर है, जो आपका एक क्रॉस स्लाइड है, दैट इज मूव with what the speed that we have maintained at the spindle, means lead screw and जो आपका spindle है, it has the same velocity at the time, okay। So this is all the theory part from my side. Now let's see the operations and what the tool are affiliated with this. देखिए this is turning, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैंने पहले ही बोला है आपको, बेसिक में कवर करा देता हूँ। जो देखिए ये चीज़ें सारी मैंने क्यों बताई है आपको इस क्लास इस वाले में, बिकॉज ये सारी चीजें क्या है कि बहुत सारे PSU एग्जाम्स या फिर आपका JEE के एग्जाम्स होते हैं स्टेट के, तो उनमें पूछी गई हैं, ठीक है। हालांकि इस लेवल का आपको गेट में नहीं पूछा जाएगा, ES में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डिस्कस की है कि मान लीजिए क्रॉस स्लाइड क्या होता है, आपका हाफ नेट क्या होती है, आपका कंपाउंड स्लाइड क्या होता है, टेलीस्कोप क्या काम करता है, लाइव सेंटर किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको definitely you will see these things, okay there। तो next one is देखिए ये आप जानते हैं कि this is a turning operation, this is a single point cutting tool is there, and this is like initially the diameter was this one D1 and finally this is D2, so this is the turning operation that we can do over in this operation, in this milling machine, sorry, turning operation, okay। This is a straight turning, this is a straight turning, ठीक है। This is a facing operation where we are keeping this single point cutting tool over the tool post and we are giving a feed in this direction. So this is the depth of cut, nothing but that we have chosen initially. So we are moving in this direction. So this much amount of the material is removed from this workpiece, and now this much is remaining, okay। Or automatically when you will reach up to here, a complete amount will be removed from this one. So this is a facing, fine। Next is the taper turning. So taper turning is as I said that this is nothing but a cross slide, okay, this portion. This one is that disc basically over that this angle is written over there, okay, and this is nothing but this is the compound slide, okay, compound slide. So over that basically the single point cutting tool is mounted. Now there is a feeding device is available, so through that we are giving a feed to it, okay। So this is moving in this is reciprocating in this direction, so this is the taper turning, taper turning। This question is important from the engineering services as well, because कन्वेंशनल स्पेशली, और ऑब्जेक्टिव में तो खैर है ही, ऑब्जेक्टिव में तो सारी एग्जाम्स में है, बट कन्वेंशनल में है, क्योंकि देखिए कन्वेंशनल में क्या होता है कि समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड इन 10 to 15 मार्क्स that you should write what kind of operation that can be performed on the lathe machine, okay। So these are the operations. Now next one is the parting or the external grooving. Basically this is the groove that we have, this is the complete workpiece, okay, and we have mounted this, we have to remove this much amount of the material, means we want to make a groove
or external groove we can say. So for that we are using this is the parting tool. Okay, parting tool means edge is there, and this edge, through that edge basically the material is removed. Okay, so now it's like we are not using a single point cutting tool. On behalf of that we are using an edge. Okay, by the way, in single point cutting tool also, to remove the material we are using edges only. Okay, now this is basically sorry, this is the parting. This is the parting. This is external grooving. Okay, this is external grooving. Little difference is there. External grooving. देखिए difference क्या है? Difference सिर्फ इतना सा है कि here like this area is a little bit large. मतलब जो आपका length है through which you are removing the material, that is large. But if it is देखिए actually जो आपकी लेंथ ये वाली है, अगर मान लीजिए इसके लिए भी आपके पास पार्टिंग टूल अवेलेबल है, then you can remove this material from the parting tool only. Okay, you can use that as well. Okay, there is no need to use the single point cutting tool. But इसमें मैं आपको समझाना ये चाहता था, that's why I written this one. मैं इसमें समझाना ये चाहता था कि देखिए आपको यहाँ पे क्या है कि परपेंडिकुलर बनाना है साइड्स में, ठीक है। पहला तो क्या करिए, या तो आप पार्टिंग टूल यूज कर लीजिए। पार्टिंग टूल यूज करेंगे तो इस तरह के पार्टिंग टूल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको, जो कॉर्नर होंगे वो आपको कंप्लीट 90 डिग्री पे मिल जाएंगे। बट इसमें क्या है कि अगर आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज लेंगे, अभी तक जैसे कर रहे थे, मान लीजिए इस तरह के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अगर हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें उस केस में क्या होगा कि आपको यहाँ पे कुछ एंगल रह जाएगा, आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी बन जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको क्या करना है, या तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को जितना भी एंगल आपने बनाया है वो रोटेट करिए और 90 डिग्री पे बनाइए उसको, ठीक है। या फिर क्या करिए कि ज्योमेट्री, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री ही 90 डिग्री कर दीजिए। जिसमें क्या था, हमने एक बार पढ़ा था कि अगर मान लीजिए आप लैम्बडा की वैल्यू को 90 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हम ये चीज देख चुके हैं। आप 90 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी, ये वाली जो वैल्यू होगी ये 90 डिग्री हो जाएगी एंड दैट विल बिकम स्ट्रेट। ओके, तो इस केस में क्या होगा, एफ आर की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, मतलब रेडियल जो फोर्स है वो आपका वो 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनिशियली दिस वाज द शाफ्ट, बेसिकली दिस वाज द शाफ्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द थ्रेडिंग ऑपरेशन एंड दिस इज द थ्रेडिंग, नथिंग बट, सो दीज आर द threads that has been formed once it will rotate, and we have to make some coordination with the lead screw by using that. And this is nothing but a single point cutting tool only. Okay, next is the knurling. This is threading, this is knurling. Okay, knurling क्या होता है, देखिए आपका ये एक पेपर शाफ्ट है, ठीक है, स्टेप शाफ्ट है, सॉरी स्टेप शाफ्ट है। और मान लीजिए कि आपको हमेशा ये वाला जो पोर्शन है इससे आपको होल्ड करके रखना है इस चीज को, ठीक है। तो होल्ड करने के लिए क्या है, देखिए जो मेटल होते हैं, तो मेटल को मान लीजिए कि मुझे इसको इस तरह से होल्ड करना है। तो राइट नाउ इट्स इजी फॉर मी, बट इज लाइक मुझे 10 मिनट 15 मिनट तक होल्ड करके रखना है, देन इट विल नॉट बी इजी फॉर मी। और मटेरियल्स होता है, ऑयल्स होते हैं, दैट इज बिकॉज ग्रीसिंग होती है कभी कभार, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड इट। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट मेकिंग द surface not irregular, we cannot say, but we are making some rough surface, but in a systematic way. Okay, rough इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं उसको पकड़ ना सकूं, rough in that sense कि like we are making some hole over there, but this hole is in a systematic way. So basically क्या है, this is a tool, knurling tool is available in the market. So this has a good hardness that is generally made up of the HSS. And over that basically this is mounted on a shaft. This is a complete assembly. Over that this knurling tool is mounted. So this portion we are holding over the tool post, okay, and tool post here, this portion is we are holding over a tool post, and this is the shaft. Over that this is rotating, this is like a wheel, okay. So this is the shaft, and over that this knurling tool is mounted, so it will rotate. Why it will rotate? Because this portion, this is the shaft, so over that this is connected with the spindle, okay. So this will rotate, so that will, when it will, this portion will come in contact with this one, this will also rotate, okay. So when it will rotate, that will make the knurling portion, okay. So that's it. So this is all about in operations from my side. So I'm going to just going in the detail, not in that much again, but the basic things, okay, which is which includes the formulas, okay.
So first is the turning operation. Initially we are taking that this was the diameter and this is D2, this is D1, this is D2, this is a single point cutting tool. Okay, and this is nothing but the depth of cut. Straight I am taking. Okay, this is not inclined portion is depth of cut, but the vertical portion. Okay, so this depth of cut. So if the depth of cut is not given, but initial and the final diameter is given to you, so you can calculate this value, that is that will be equals to D1 minus D2 by 2. ठीक है, d1 माइनस d2 तो क्या होगा, ये थिकनेस ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन दोनों हो जाएगा, तो दिस विल बी d1 माइनस d2 by 2. ठीक है, नाउ मान लीजिए कि इसमें आपको f is the feed which is given to you, that through which this single point cutting tool is moving in this direction, and is the rotational speed through which this shaft is rotating. Okay, so f into n हो गया. Now if you have to calculate the MRR is what, material removal rate, and material removal rate is what, that is how much amount of the material is removed per unit time. Okay, how much amount, what it will show, that it shows the volume. Okay, so that shows the volume, so that is nothing but that is pi by area that is removed into f into n, means what was the actual speed in that direction. Okay, so this is again I'm saying this is the actual speed, sorry, actual speed. Okay, or feed also, sometimes in numerical problems it is written with the feed. Okay, f into n. So this area is what, how much amount of the area that has been removed from this surface. Initially it was pi by 4 d1 square, but that is not removed completely. How much you have removed, that is means still pi by 4 into d2 square is there, so pi by 4 into d1 square minus d2 square, that is remaining, sorry, that has been amount, that the area has been removed, so that is into f into n. So this is MRR. Okay, this is very important. And one more thing is there, that sometimes it can be asked that what is the average diameter. So this average diameter will be equals to d average will be equals to d1 plus d2 by 2. ठीक है, तो इसको फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, that is MRR will be equals to pi by pi into d1 minus d2 by 2 into d1 plus d2 by 2. ठीक है, f into n. तो यहाँ से देखिए d1 minus d2 क्या है आपका, डेप्थ ऑफ कट, d1 plus d2 by 2 क्या है, that is d average. So you can write this formula like MRR will be equals to pi into d into capital D average into f into n. ठीक है, देखिए ये सारी चीजें क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स में कभी कहीं PSU वगैरह में कुछ पूछी गई है, that's why I am using these things. Otherwise मुझे इतना पता है कि आपको ये सब पता है. ठीक है, मैं इतना जानता हूँ. टेपर टर्निंग में देखिए ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि देयर इज अ एंगल इज देयर, सो हाउ टू कैलकुलेट दैट एंगल, जस्ट आई एम यूजिंग दैट वन. So this is the initial diameter, that is d1, and this is the final diameter, that is d2. Okay, तो आपको देखिए जितना ये टेपर करना होता है, मान लीजिए आपको बाद में d2 बनाना है, इनिशियली आपका d1 है, तो जितना आपको डायमीटर रिड्यूस करना है, ठीक है, उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या था, पहले तो ये स्ट्रेट ही था. ठीक है, अगर ये मान ये पहले स्ट्रेट ही था, तो स्ट्रेट से आपने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया. ठीक है, जब आपने इसको रोटेट किया तो कुछ एंगल रोटेट किया होगा. नाउ दिस हाउ वी विल डिफाइन दिस एंगल. दिस एंगल is defined by like how much amount of the diameter you have to reduce. Okay, how much amount of the diameter that you have to reduce. ठीक है, तो आपको कितना करना है, फाइनल कितना लाना है, d2. ठीक है, तो दिस वन आपकी ये जो है, this one is nothing but the length for the turning, because it can be very like this shaft is total length of this shaft is from this one, from this point to this point, but now we are doing taper turning for this portion only, L length we can say. Okay, so this is not the complete length, so this is the length over which the turning is required, and this is the diameter, sorry, this is the angle for which this amount of the material we have to remove, or whatever this angle we have to set over this compound slide. Okay, compound slide. So this is alpha, just assume that this is the alpha. So how we can calculate, so this is the centroidal axis, so this much is what, this is d2 by 2, and this is d1 by 2. So if you take d1 minus
d1 minus d2 by 2. So this portion will be d1 minus d2 by 2, this portion, okay, and this is length. So tan alpha, because base is given to you, perpendicular is given to you, so this will be equals to tan alpha will be equals to d1 minus d2 by 2 into L. Okay, so from here you can calculate the value of alpha. So this is nothing but tan inverse d1 minus d2 by 2 into L. ठीक है, फाइन. सो दिस द टेपर टर्निंग. तो ये जो अल्फा आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रू को थोड़ा रिमूव करके नाउ यू विल रोटेट दिस एंगल, दैट हाउ मच एंगल इज रिक्वायर्ड. जो भी यहाँ से एंगल आता है आप उसको रोटेट करिए, एंड दिस सिंगल पॉइंट इज कटिंग इज माउंटेड. फ्रॉम हियर नाउ विल गिव द फीड, means while keeping the single point cutting tool over here, we will give feed to the tool in this direction. Okay, so that will make the taper turning. इसके बाद क्या होता है कि आपको देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं गया कि बट क्वेश्चन बनने की चांसेस है कि टेपर टर्निंग में क्या होता है, आपको once this angle is set over this compound slide, so now the feed is provided to cross slide or compound slide. Okay, this question can be asked. This will be provided to the compound slide. ठीक है. Now threading. देखिए थ्रेडिंग के लिए पहले ये वाला फिगर सिर्फ ड्रॉ किया था, नाउ आई एम यूजिंग दिस वन. ओके, तो देखिए थ्रेडिंग के लिए यहाँ पे आपकी ये जो है आपका, दिस इज नथिंग बट अ लीड स्क्रू. जस्ट ट्राई टू एज्यूम. ठीक है, ये आपका लीड स्क्रू है. देखिए लीड स्क्रू में जब भी आपका कोई शाफ्ट पे आप थ्रेड्स बनाते हैं तो उनके बीच में एक पिच डिसाइड किया जाता है. कुछ टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूं. पहली है पिच. ठीक है, पिच क्या होती है कि मान लीजिए आपकी, देखिए ये आई डोंट नो दोज हु हैव स्टडीड कंप्लीटेड देयर इंजीनियरिंग, दे ऑल आर अवेयर अबाउट. दोज हु आर जस्ट नाउ स्टार्टेड देयर इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, स्पेशली इन कोर सब्जेक्ट्स, third semester onwards, so they are new to these things. Okay, so for that only I am just writing over here that just it will take 5 to 10 minutes. Okay, so this is nothing but this portion is lead, this is the pitch. Okay, now for the lead screw the pitch we are taking, that is L. Okay, for the lead screw. Now because all these things, like this is the shaft. Okay, initial we have this diameter. Okay, this diameter, and now we have reduced this one, so like over that we have made the thread. So this is the thread portion, and like this is connected with the spindle, and spindle inside that connected with the another gear assembly. So this gear assembly is connected with this spindle, this lead screw as well. But as I said that for the threading purpose we have to make this velocity is constant, with cutting speed should be constant. क्योंकि क्या होता है, देखिए आपकी दो चीजें हैं कि मान लीजिए कि अब मैं ऐसा क्यों समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा क्यों कांस्टेंट होनी चाहिए वो बता देता हूँ. देखिए मान लीजिए कि आपका ओके, दिस इज योर शाफ्ट. ओके, एंड दिस इज योर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में अब तक क्या करते थे, देखिए आप इसको फिगर को देखना और मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना कि देखिए ये एक शाफ्ट है आपकी, ये रोटेट कर रही है, और ये आपका टूल है. दिस वंस दिस ऑपरेशन विल स्टार्ट, यू विल गिव द फीड इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो इसका मतलब क्या था कि आप जब भी आपका रोटेशन हो रहा है, देन यू आर गिविंग अ फीड इन दिस डायरेक्शन एंड द मटेरियल इज रिमूविंग. तो मटेरियल क्या मतलब अल्टरनेट निकल रहा था क्या, मटेरियल थ्रू आउट द पीस निकल रहा था. मतलब ये जो पूरी सरफेस, मान लीजिए कि आप यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं, तो ये जो पूरा ऊपर जितना डेप्थ ऑफ कट आपने लिए वो पूरा मटेरियल आपने क्या किया है, रिमूव कर दिया है. ठीक है, अब अगर मान लीजिए रिमूव कर दिया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस पे थ्रेड्स, मतलब वो फ्लैट हो चुकी है, मतलब फ्लैट इन द सेंस पूरा क्लीन हो चुकी है सरफेस, उस पे किसी तरह का रबिंग तो है नहीं, या फिर मान लीजिए थ्रेड्स तो बना नहीं. थ्रेड्स कब बनते हैं कि आपको डेप्थ ऑफ कट भी देना है थ्रेड्स में. ये क्या है, ये डेप्थ ऑफ कट ही तो है. ये आपका क्या है, ये आपने इनिशियली डेप्थ ऑफ कट रखा, जितना आपको थ्रेड की लेंथ लिखनी है आप रखनी है उतना ही आपने डेप्थ ऑफ कट दिया. तो यहाँ से क्या है, आपको डेप्थ ऑफ कट देना है, लेकिन आपका लीड स्क्रू के साथ साथ आपकी जो ये मतलब स्पिंडल की जो स्पीड है और लीड स्क्रू की जो स्पीड है वो सेम रहनी चाहिए. अगर मान लीजिए सेम नहीं रहेगी तो आपकी टर्निंग हो जाएगी फिर. ठीक है, तो सेम रहने की वजह से क्या होगा, मान लीजिए देखिए ये यहाँ पे इस तरह से मूव कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है और ये मूव कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन में ये यहाँ से चल के यहाँ तक आया और मान लीजिए एक रोटेशन हो चुका है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या है कि थ्रेड बन चुका है. ठीक है, अब वो थ्रेड जो है, थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया था
और ये रोटेट होते 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 वापस इस जगह पे आया, मतलब इस वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये वाला जो थोड़ा स्प्लिट है, ये यहाँ से रोटेट होना स्टार्ट किया और वापस यहीं पे आया और तब तक ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस केस में क्या है कि आपका यहाँ से लेके यहाँ पे स्टार्ट किया था नीचे वाले पोर्शन से, यहाँ पे भी नीचे है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज अ पिच, ओके। एंड अब आपको समझ में आ गया दोनों की स्पीड रखना सेम क्यों जरूरी है। अगर मान लीजिए आप सेम नहीं रखेंगे, कम रखेंगे या ज्यादा रखेंगे, देखिए ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, आपकी इरेगुलर शेप्स बनती जाएंगी, ठीक है। कम रखेंगे तो क्या एक सारा मटेरियल रिमूव होता जाएगा। आपको सारा मटेरियल भी रिमूव नहीं करना, आपको रेगुलर शेप भी नहीं बनानी, आपको क्या प्रॉपर वे में थ्रेडिंग बनानी। तो आपको इसकी स्पीड और आपकी जिसपे ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल माउंटेड है, ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल तो माउंट किस पे, टूल पोस्ट पे, टूल पोस्ट किस पे माउंटेड है, कंपाउंड स्लाइड पे, कंपाउंड स्लाइड क्रॉस स्लाइड बेड पे, बेड किससे कनेक्टेड है, लीड स्क्रू से, लीड स्क्रू किससे कनेक्टेड है, हाफ नट से। इसका मतलब क्या है, आपको लीड स्क्रू को स्पिंडल की स्पीड के साथ मैच करना है तो आपको हाफ नट को क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो क्या क्या टर्म्स यूज कर रहे हैं, मान लीजिए इसके लिए जो शाफ्ट जिसके लिए पिच, देखिए पिच अगेन, देखिए पिच अगर वेरी होता रहता है उसका कंसेप्ट भी मैं आगे बता देता हूँ कि इसका पिच जो है, क्योंकि आपने क्या है कि ऐसा नहीं है कि देखिए कटिंग स्पीड सेम ले ली, इसका मतलब ये नहीं है कि पिच भी सेम रहेगा। अगर पिच सेम रहेगा तो फिर आपको क्या है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स वैसे ही बनाने पड़ेंगे जिससे पिच बनाना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए ये जो पिच है आपका, दिस इज स्मॉल पी, ठीक है, you are giving this feet of this to the single point cutting tool in this direction, ये जो आपका L है, ठीक है, L is nothing but the not length, here it's a this I'm writing over here, okay, so L is the pitch of lead screw, okay, P is the pitch of shaft, or workpiece can I write, that would be fine. Now there are like it depends कि पिच आपका अलग क्यों हो जाता है, कि आपका डिपेंड करता है कि आपका नंबर ऑफ टीथ कितने फॉर्म करना है। मान लीजिए कि ये जो टीथ है, मान लीजिए कि लीड स्क्रू जो आपने इनिशियली आपने लेथ के साथ कनेक्ट कर दिया है, अब उस पे आप पिचेस को बार बार सेट नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक ही बार सेट हो सकते हैं। अगर आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, अगर आपको डिफरेंट करना है तो, ठीक है। लीड स्क्रू के ऊपर जो नंबर ऑफ थ्रेड्स, सॉरी नंबर ऑफ आपका टीथ होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक टीथ हो गया, फिर दूसरा टीथ, फिर तीसरा टीथ, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, इस तरह से, ठीक है। जो टीथ होते हैं, दिस इज लाइक 1 टीथ, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से। Now it depends that how many pitch we have to form, sorry teeth we have to form. So here we are assuming that ZW is the number of teeth on workpiece, okay, and ZL is the number of teeth on lead screw, ठीक है। तो ये आपका दूसरी चीज होगी। नेक्स्ट इज द आरपीएम। देखिए रोटेशनल स्पीड, अब देखिए स्पीड सेम होने का मतलब कभी भी रोटेशनल स्पीड सेम नहीं होना होता है, मतलब जरूरी नहीं कि आपका रोटेशनल स्पीड भी सेम होगी, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई पावर आपकी इनपुट डिवाइसेस है, जो आपका गियर है। नाउ फर्स्ट इट इज कनेक्टेड विद दिस spindle, then it's connected with another gear, this is first, this is second, this is third, and this is fourth one is the spindle basically, okay. So this third and fourth is connected with this that has the assembly, okay. तो देखिए इनका, देखिए जब आपके जो गियर होते हैं, बेसिकली गियर में आपकी जो, देखिए मान लीजिए कि इस तरह से दो गियर हैं, ठीक है। तो दोनों गियर में इस पॉइंट पे क्या होता है कि आपका हम लोग स्लीपिंग कंसिडर, मतलब चलिए छोड़िए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इस पॉइंट पे जो दोनों की वेलोसिटी होंगी वो सेम होगी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज v1 v2 will be equals to v1 v2 will be equal, so this is pi into d1 into n1 upon 60, and that will be equals to pi into d2 n2 upon 60, ठीक है, ये ठीक है। Now what I am taking is, देखिए अब आपका यहाँ पे रोटेशनल स्पीड क्या है कि स्पीड सेम होने का मतलब अब आपका यहाँ पे रोटेशनल स्पीड सेम होना नहीं है, क्योंकि डायमीटर पे भी वो डिपेंड कर रहा है। Now it depends that how much diameter that you are taking and how much diameter we are taking of this lead screw, so that is different.
बट यहाँ पे हम लोग क्या डायमीटर का कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस चीज को पकड़ के ये वाली जो इक्वेशन है दैट इज पाई सॉरी d1n1 इक्वल्स टू d2n2, ठीक है, ये तो होगा, ठीक है। इससे क्या कर रहा हूं मैं, देखिए एक कंसेप्ट और यूज कर रहा हूं दैट इज पिच इक्वल्स टू पाई इंटू एम होता है। नाउ एम क्या होता है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दैट इज मॉड्यूल। देखिए जिन्होंने काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ मशीन्स पढ़ा है या फिर थ्योरी ऑफ मशीन, कभी किसी किसी यूनिवर्सिटी में उसका नाम होता है, तो थ्योरी ऑफ मशीन अगर आपने पढ़ा है तो आपको सब पता है, ठीक है, मॉड्यूल क्या होता है, पिच क्या होता है। नाउ दिस पिच मॉड्यूल विल बी इक्वल्स टू डी बाई टी, बट मैं यहाँ पे z से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज नंबर ऑफ टी। तो p क्या हो जाएगा पिच, दैट विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू डी बाई z, ठीक है। नाउ d की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, दैट इज p इंटू z अपॉन पाई, ठीक है, p into z upon pi. So this is p1 into z1 upon pi into n1, ठीक है, n1 कर लीजिए अभी, p2 into z2 into n2 upon pi. So this is cancel out, ठीक है। तो देखिए p1 मान लीजिएगा वर्कशॉप को कंसिडर करते हैं, तो p1 पिच कितना है, दिस इज p, ठीक है, और zw that is number of teeth and that is rotational speed of the workpiece, that is nw, that will be equals to L, that is the lead screw, and ZL, that is the number of teeth on the lead screw, and this is NL, that is the rotational speed of this lead screw. So this equation is very very important. देखिए बहुत सारी बुक्स में ये इक्वेशंस लिखी रहेंगी, लेकिन ये जो कंसेप्ट है कि हाउ दिस ये जो पूरा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है कि ये फॉर्मूला बेसिकली आया कहाँ से। आप क्या करते हो कि जब भी आप एग्जामिनेशन किसी भी गेट की एग्जाम की तैयारी करते हो, मतलब गेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप उसकी तैयारी करते हो, तो क्या होता है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, रटते हैं, ठीक है। वो ये नहीं देखते हैं कि ये फॉर्मूला बेसिकली आया कहाँ से, क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मेमोराइज किया जा सकता है, लेकिन अब मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ही बताया है, आप और बुक्स या फिर अदर जो those who are teaching these things, they can also they have also done these things, but this is how this we are getting this formula, okay. So there is no need to memorize this one, you can just directly put this basic concept of this velocity, okay, this one. So here अगर आपको जितने भी number of teeth वर्क पीस पे बनाने हैं, from this we can get this idea, okay. So initially we have to set that how much pitch, देखिए पूरी लेंथ के ऊपर नंबर ऑफ टीथ को डिवाइड करिए और पिच उससे निकल आएगा, ठीक है। तो पिच निकल आएगा तो आपको नंबर ऑफ टीथ कितने बनाने हैं आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज L into ZL into NL upon P into NW, ठीक है। So you can get the value of ZW, that how many number of teeth you have to form, okay. So let's move to the next one. So next one is the number of spindle speed. So the spindle speed, this is nothing but as I said that there are different this gears are mounted basically in the column, okay, that is connected with the lead screw, that is connected with the spindle, okay. So this we are considering their velocities. So this velocities, like if we are considering that there are, क्योंकि देखिए आपका जो वर्कशॉप्स होती हैं तो उनमें छोटी छोटी सी लेथ होती है, so 4 to 5 gear assembly is there, okay, but larger size जो आपकी lathe होती हैं, because for that a very small rotation is required, okay, rotational speed is required, तो उसके लिए क्या होता है, multiple number of spindles we are using. Number of spindle speed का मतलब है यहाँ पे कि like number of gears we are using basically, okay. So this terms are like they have a number of velocities, different types, different gear has a different velocity. So this is nothing but N1, N2, N3, okay, and this is up to Nm, okay. So this one we can write also like that, like this one, N1 into R, N2 into R square, okay, N3 into R cube, and up to like this, okay, and sorry, this is N1, okay, this is N1 into R cube, N1 into R raised to power n minus 1, okay. Now what is this R is? R is nothing but this R is a step ratio. What is this step ratio is? If we are assuming that this is the minimum speed, okay, and this is the maximum speed, so this is nothing but the ratio of maximum speed
to the minimum speed. Okay, so from this basically so this is n max upon n minimum. Just a minute. So this is n max upon n minimum raised to 1 upon n minus 1. This is the ratio, okay, step ratio. So n max is nothing but it is the n max is nothing but it is the this one speed, sorry, this is n max is nothing but this is n1 into r raised to power n minus 1, ठीक है, और n minimum जो है आपका this is equal to n1, okay, so this is ratio and again it is 1 upon n minus 1. please ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है. So this is the number of spindle speed. If because actually sometimes this problem has been asked, so that's why I'm using this one, okay. So let's see this one, this problems, okay. This is basically the same concept asked in the 2 times or maybe number of times, but ये दो मुझे मिले हैं, that is ES 92 and ES 2001. That feed gearbox for a screw cutting lathe is designed on the basis of geometrical progression, arithmetic progression, harmonic progression and none. देखिए basically when you will see this one, like from here whatever the formula that we are getting, that is n2 by n1. n2 by n1 जब आप इसको करेंगे तो आपको क्या मिलेगा r, ठीक है. जब आप n3 by n2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको r, ठीक है. तो this ratio nothing but this is n2 by n1 equals to n3 by n2, nothing but like that n4 by n3. इस तरह से क्या होगा जब आप कैलकुलेट करते हैं, so this you are getting r, okay. तो ये r क्या जब आप इस तरह से करते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं, this is nothing but the GP, okay. So this is geometrical progression. The spindle speed range in a general purpose lathe is divided into steps which approximately follows the GP, okay. Okay, easiest problem देख लेते हैं. easiest क्यों है, क्योंकि इसी तरह की प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें. तो a 150 mm long, okay, this is a length is given to you, initial diameter that is d of 304 स्टेनलेस स्टील रोड. देखिए 304 जो है ना ये स्टेनलेस स्टील की कैटेगरी है, ठीक है, तो इसको कोई पॉइंट मत मान लेना. is being reduced to in a diameter to 11.5 mm. देखिए इसको अगर आप दो डायमीटर गिवन है तो यहाँ पे इसको d1 कह लीजिए, इसको d2 कह लीजिए, ठीक है. By turning on a lathe, the spindle rotates at n which is 400 rpm and tool is traveling at an axial speed. It's not a cutting speed, okay. Axial speed of 200 mm per minute. The time taken for the cutting is given by. देखिए टाइम IAS में पूछा गया है, इसीलिए ये यहाँ पे मैंने बोलना जरूरी था, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या एग्जाम का लेवल होता है. देखिए टाइम कैलकुलेट किया है करना है आपको, सो दिस इज गिवन एज L by F into N, ठीक है. देखिए N आपको गिवन है लेकिन फीड आपको गिवन नहीं है, ठीक है. तो देखिए सिंपल सी चीज है, सबसे पहले L लेंथ आपको गिवन है. देखिए सिंपल सी चीज है वो ये है कि कटिंग स्पीड जो होती है वो होती है V and that is represented by the pi into D into N. आपको पाई तो वैल्यू पता ही है, D की वैल्यू आपको गिवन है, N पता है. तो आप पहले एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो आप यहाँ पे मैंने जैसे बोला था कि ये एक्सियल स्पीड है ना कि फीड है, तो इसका ना कि सॉरी कटिंग स्पीड है. तो कटिंग स्पीड तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, आपको उसके लिए दोनों डेटा भी गिवन है, तो आप क्या आप इससे पाई इंटू डी दैट इज देखिए डी एवरेज ले लीजिए, दैट इज 12 प्लस 11.5 by 2, ठीक है, इंटू एन. एन आपका कितना है, रोटेशनल स्पीड है. तो जब आप इसको v कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपकी v की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर देता हूं. So what the value that I am getting is that is okay मुझे 14 point that is 765 meter per minute. Okay, by the way यहाँ पे 10⁻³ भी करना था, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में कर ली वो चीज, लिखना मैं भूल गया, ठीक है. तो यहाँ पे आपको मिल रही है दैट इज v दैट इज 14 पॉइंट समथिंग, ओके, मान लीजिए 15 मान लीजिए, बट एक्चुअल स्पीड जो है वो आपको गिवन है दैट इज 200. तो ये मैच तो नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, ये जो आपको गिवन है वो आपकी कटिंग स्पीड तो नहीं है. अब एक्चुअल स्पीड क्या होती है, दैट इज द f into n, ओके, ये प्लीज ध्यान रखिएगा आप. तो L into n, L आपको दिया है दैट इज 150 mm,
ठीक है। f into n that is आपको डायरेक्टली अब n की वैल्यू और f की वैल्यू सेपरेट नहीं रखनी है, आपको डायरेक्ट गिवन है that is 200, so this is 200, so this is in minutes, whatever the value that you will get it that is in minutes, so then nothing but this is 3/4 and this is 0.75 minutes, okay, but questions 1 minute है, इसके अलावा सारे सेकंड्स में है, तो जब आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, so this will be like multiply by 60, so this will be 45 seconds, ठीक है, so option will be D. So thank you so much guys for joining this session, and देखिए still I tried that whatever the possibilities are there in the lathe part, I tried to cover that, okay, and जितना easiest way में मैं आपको समझा सकता था, I tried for that as well. So still you feel that some of the topic, if you are facing any queries in some of the topic in the lathe machine especially, so you can just keep me posted on the comment box or in the telegram group, so that I will basically at the end of this session I will make the topic which is based on the miscellaneous, okay, so in which we will cover all the topics which we have left, और छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं वो छूट जाते हैं कंसेप्ट के चक्कर में, so that we will also cover in that, okay, so you can write over there, okay, so thank you so much guys for joining this session.